Warm good evening, all my dear students of class 10. Yes, we are live now. So, already we have started the next chapter of biology, control and coordination. Daily 7:30 p.m. except Sunday. Already we have started the live session from so many days. We have completed the chapter life processes in biology, chemistry first chapter, chemical reactions and equations also we have completed two chapters from science, and from biology the next chapter in live session third chapter, control and coordination. Okay friends, the first part already we have completed in the yesterday, that is concept map we have seen. So today let us continue students. Okay, shall we start now? Join as early as possible. 7:32 it is. Okay, fine. Yesterday, hi. Yesterday we are studying about receptors, isn't it? Yesterday we are talking about receptors in our eyes. Inside, from backside our eyes, the nerves are connected to the brain. Those are known as photoreceptors. Photo, light. Five sense organs are there in our body: eyes, ears, nose, tongue, and skin. Eyes, which receptors are present? Receptors means I have told you yesterday, receivers. Photoreceptors. Photo, light. In the presence of light, we can see everything because the receivers will send the message to the brain. You are watching the live session. How it is possible? Photoreceptors are present in our eyes. Okay. Eyes. Ears. Ears, inside the ears, the receivers which are receptors, that is receivers which are present and connected to brain, those are known as phonoreceptors. Phonoreceptors. Photoreceptors in eyes, phonoreceptors in ears, olfactory receptors in nose, olfactory, smell. Okay, clear? Gustatory receptors in tongue. We taste different types. Already you know, sweet, salt, bitter, sour. So in tongue, gustatory receptors are present, students. We can taste variety of tastes. Skin, thermoreceptors. So thermoreceptor, just we feel the heat, cold, touch, pain from skin. Inside the skin to our brain or spinal cord, receptors are present. So in all five sense organs, receptors are present, students. Okay, photoreceptors in eyes, phonoreceptors in ears, olfactory receptors in nose, gustatory receptors in tongue, thermoreceptors in skin. Is it clear? So yesterday we are talking about these receptors, students. Okay, how the okay message is going to our brain? From where it is going? Receptors. What are receptors? Those are nothing but neuron. Neuron, another name is there, that is known as nerve cell, students. Nerve cell. In the 9th class, you have studied the first chapter of biology, fundamental unit of life, cell. Variety of cells are present in our body. So nerve cell is also present in our body. This is responsible for transfer of messages. यही जो चीज है, इससे हम लोगों को मैसेज पहुंचता है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से जो मैसेज आता है, हाथ उठाना है, ओके, स्मेल, ये नाही का? हाँ, ये ना साउंड बंद झालं. Okay, students, sorry for that interruption. So just okay.
receptors, nerves are present, neuron is another name is nerve cell. The length of the nerve cell, it is not there in your textbook, okay. 90 to 100 centimeter is the length of the nerve cell, 90 to 100 centimeter. So it is the longest cell in our human body. In human body, which is the longest cell, students? Nerve cell or neuron. Two names are there. Nerve cell or neuron. This is the structure of neuron, diagram of neuron. This diagram is there for your examination. You have to practice this one. Okay, clear? First, let us study about the structure of neuron. So, students, whatever you are observing here, okay, outside the cell, so these are called as dendrites, students. What are these? Dendrites. You are observing here, okay, dendrites. Next, this complete is there, na? This one is known as cell body. What it is? Cell body. Dendrites, cell body, and the middle one dark structure, stained structure is there, dark color, that is nucleus. Nucleus is present in the cell as already you have studied. Okay, fine. The longest structure in the neuron is axon. Axon. Okay, so axon is covered by one layer outside, that is known as myelin sheath. Myelin sheath is helpful for fast transformation of message. Myelin sheath covering of axon. And next is nerve ending. What is the last one? Nerve ending. How the messages will transfer? Okay, let's see. Messages will enter. The messages actually comes in the form of electrical impulses. How the message is going inside our body? Electrical impulses. From which part? Dendrites. Dendrites receive the signals, electrical impulses in the form of electrical impulses, and the message is sent to the axon, and the message is coming towards the nerve ending, and again the message will go to the next neuron. Like this, neurons are connected. This is one neuron, next neuron, next neuron. The neurons are connected continuously in our body. Nerve cells. Is it clear? So the question has been asked in MCQs. What is the how does the message or information transfer inside the neuron? Dendrites. First message will enter from dendrites, cell body, axon, nerve ending, and next transfers to next neuron. Is it clear? Just now we have seen the diagram or structure of neuron. So students, what is neuron? Neuron means what? Nerve cell. Okay. What it is? It is a structural and functional unit of nervous system. So in our body, nervous system is present as how muscular system, digestive system, excretory system, circulatory system, reproductive system. In the same way, nervous system is present. The nervous system's main important thing, that is known as neuron. It is having structure. So neuron is a structural and it does function. Message is transferring, function is doing. Neuron is a structural and functional unit of nervous system. Are you getting, students? Please ask questions if you are facing any doubts. Okay, fine. Continue. Just I'm checking few comments if anybody is asking doubts. Okay, let's parts of neuron. Just now we have seen dendrites. What is the function of dendrite? Acquires information. Acquire मतलब क्या है? Acquire मतलब receive करना है, लेना है. क्या लेना है? Information लेना है, message लेना है. कौन लेता है ए सेल के अंदर? Who will take the information? Dendrites. Is it clear? So I have mentioned here. Okay, fine. Next one is cell body. This is the cell body, students. Around up to here. Okay. Acquired information travels as an electrical impulse. Message कैसा जाता है इसके अंदर?
How does the message will go inside? In the form of electrical impulse. Impulse मतलब क्या है? Signals, information, electrical impulse. The message will transfer inside the neuron in the form of electrical impulse. Next one, axon. क्या है axon? क्या है? Longest fiber on the cell body. इस सेल के अंदर longest जो है वो है axon है. Axon का काम क्या है? Transmits electrical impulse from cell body to dendrites of next neuron. नेक्स्ट न्यूरॉन जो रहता है उसका डेंड्राइट्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है. इट विल ट्रांसफर द मैसेज. एक्सॉन विल ट्रांसफर द मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू द डेंड्राइट्स. ओके, यस. सो दिस इज द दिस पार्ट. So next is synapse. So what is this synapse? The gap between the two neurons is called synapse. दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन है. ये दो न्यूरॉन के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचता है, गैप बचता है, the gap, the space between two neurons is called synapse. Is it clear? थोड़ा सा आप इधर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि the messages will transfer inside the neuron in the form of what I have said you, electrical impulse. Okay, when these electrical impulse enter into the dendrites, electrical impulse will travel to the cell body and next to the axon and next to the nerve ending. एंड और एक न्यूरॉन रहता है ना, उसके अंदर जाने से पहले इधर जो गैप रहता है ना, वो साइनैप्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स. दिस वन यू हैव टू रिमेंबर. सिंपल इज देयर, इजी इज देयर. ओके, ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, इसके बीच में जो गैप है क्या है? साइनैप्स है. साइनैप्स. इधर से मैसेज आता है. कैसा आता है मैसेज? इलेक्ट्रिकल इंपल्स. इधर से इधर जाने से पहले इधर जो स्पेस साइनैप्स है ना, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल इंपल्सेस, chemical signals. And again these chemical signals, when they enter into the dendrite of another neuron, these chemical signals are again converted into electrical impulses. Electrical impulses, chemical signals, again electrical impulses, again chemical signals, again electrical impulses. Electrical signals भी आप लोग बोल सकते हो. Electrical signals, chemical signals, electrical signals, again chemical signals, again electrical signals. Got it? Clear? So synapse, what it is there? What do you mean by synapse? I have already told you. The gap between the nerve ending, this is the nerve ending of one neuron and dendrite of another neuron is called synapse. Okay, clear? Here electrical signals are converted into chemical signals. This is very very important. That's why I am stressing again and again, students. क्या होता है? Electrical signals are converted into chemical signals. क्यों होता है? क्योंकि आगे जाने के लिए. So कितना wonderful it is happening in our body, students. The messages are traveling in the form of electrical impulses very fastly. आपको कोई भी बुलाता है, रोहन, फटक से देखते हो आप. Messages are sending in the form of electrical impulses, but in synapse the electrical signals are converted into chemical signals. Clear? Again when it will enter to the next neuron, it will convert into electrical signals. Okay, fine. Got it? Clear? Structure of neuron understood, everybody? Parts also we have seen: dendrite, cell body, again axon, myelin sheath, nerve ending, next synapse, next again dendrites of another neuron, cell body, axon, nerve ending, again synapse. Synapse gap है. Clear है?
इजी, वेरी इजी स्टूडेंट्स. थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए. बायोलॉजी इज वेरी वेरी इजी. यू विल स्कोर आउट इन बायोलॉजी. I will give you more and more important questions during examination. I want to give you 100%. I will tell you definitely you will score more in biology and chemistry. So whatever I am teaching, I will give my level best to you people. Fine. So fine students, we will move to the next important topic, reflex actions students. So please join as much as possible and share to your friends students. Please give a comment here. Okay, if you give comment here, I can get some inspiration, motivation, give some likes. Okay, by asking I am taking the likes from your side. Okay, no problem, no issues. So next topic is reflex action and reflex arc. Okay, two topics are very 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 important. Fine. ये जो हॉट सब्सटेंसेस है, हॉट सब्सटेंस, गरम गरम चीज है, आप लोग बिना देख के उसको टच कर दिए तो आप क्या करते हो? व्हाट यू विल डू व्हेन यू टच अ वेरी हॉट सब्सटेंस विदाउट नोइंग? By knowing, nobody will touch the hot substance, isn't it? Without knowing, if you touch the hot substance, suddenly you remove your hand. How you will remove your hand? So like this we will remove our hand. Okay, who is going to tell you to remove your hand? That is spinal cord. Who is giving that message students? Spinal cord. Brain will not give the message to remove your hand. Spinal cord will tell you to remove your hand fastly. But snake is coming. You are going, okay, you are walking, snake is coming. Suddenly snake is very nearby to you. What you will do? Suddenly you will jump back. You will come back. At the time, the fast signals will be given by our spinal cord. So that is known as reflex action. Reflex action, quick response, fast response. अगर कोई तो आपको sharp object लेके, if anybody sharp object, if they will take and they will what, pinch you. If anybody pinches you, what you will do? Suddenly you will react to that one, suddenly, fastly, immediately. That is known as reflex action. Simple. In definition, let us see now. What is reflex action? Reflex action is a quick, sudden and immediate response, fast response of the body to the stimulus. मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बोला था, इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू, स्टिमुलस changes in the environment. Changes. Okay, stimulus. You will respond to that stimulus. That is known as reflex action. Respond to stimuli. Reflex action. Who will work there? Spinal cord. Remember everybody, spinal cord मैंने बोला है तुम लोगों को, ये जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे से पूरा हमारे बैकबोन एंड तक एक वायर के जैसा, मोटा सा वायर के जैसा ऐसा एक थ्रेड रहता है, पूरा ब्रेन एंडिंग से लेके हमारे बैकबोन के एंडिंग की तरफ, इधर ब्रेन है. ये जो चीज है वो है स्पाइनल कॉर्ड. फाइन. दैट स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम. बैकबोन प्रोटेक्ट करता है. किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, क्रेनियम, द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट. कोई भी आपको पत्थर लेके मारेंगे तो ब्रेन को डैमेज नहीं होगा. व्हाई? स्कल इज देयर, हार्डेस्ट सब्सटेंस. स्कल मतलब क्या है? बोनी स्ट्रक्चर. Okay, so brain is protected by skull and spinal cord is protected by vertebral column or backbone. इस spinal cord है ना हम लोगों को reflex action, it will help for reflex action students.
When you touch very hot object, you will suddenly remove your hand because that is reflex action. कैसा होता है, क्या होता है, उसके अंदर जो चीज होता है ना, उसको ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. Let us see now first reflex action. Reflex action is a quick, sudden and immediate response of the body to the stimulus. Example, withdrawal of the hand on touching the hot object. Okay, fine. रिफ्लेक्स आर, ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो चीज होता है ना, अब गर्म चीज टच कर दिए, अब हाथ निकाल दिए, वो जो टच करने के बाद जो मैसेज जाता है, किधर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को जाता है. स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजता है, इमीडिएटली मैसेज भेजता है, रिमूव योर हैंड, हाथ निकालो, गर्म है, पटक से निकाल देते हो. वो जो अंदर का चीज जो होता है, मैसेज जाना है स्पाइनल कॉर्ड को, मैसेज आना है वापस हैंड्स को, वो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क. इनसाइड द रिफ्लेक्स एक्शन व्हाट इज हैपनिंग, रिफ्लेक्स आर्क. वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क? द pathway through which nerve impulses pass during reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर एक जो मैसेज जाकर आता है ना, during reflex action message will go and come, that is known as reflex arc. देखो अभी एग्जांपल एक इजी है, हीट है, हीट outside changes, that is known as stimulus. Okay, and you are touching the hot object, वो hot object से टच करने के बाद एक मैसेज जाता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या है, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स जो रहता है, रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स को व्हाट वी विल से सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व्स आर प्रेजेंट. नर्व सेल, न्यूरॉन, बोथ आर सेम, ऑल आर सेम. सेंसरी न्यूरॉन्स रहता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिमेंबर, सेंसरी सेंस करता है, क्या, हॉट ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट को भी सेंस करता है. कोई तो भी चुबा दिए ना आपको सेंस होता है, कैसे होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स. द सेंसरी न्यूरॉन्स विल सेंड मैसेज टू हूम, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दोनों नर्व्स मिक्स रहता है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स आर मिक्स्ड इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड. सर मोटर न्यूरॉन्स क्या है, जो मैसेज आता है ना स्पाइनल कॉर्ड से, हाथ निकालो, वो कौन से नर्व से आता है, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स. वो किसके अंदर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो आता है ना वो नर्व्स, वो आके मैसेज किसको देता है, मसल्स को देता है. हमारे मसल्स, नर्व्स एंड मसल्स आर अटैच्ड, दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरो नर्व, मसल्स मस्कुलर, जंक्शन मीट होता है. Nerves or muscles both are combined. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किधर होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मोटर नर्व्स एंड मसल्स जो अटैच रहता है उसको हम इफेक्ट होता है. रिसेप्टर्स विल रिसीव, इफेक्टर्स विल गिव द मैसेज. सो सडनली तुम लोग क्या करते हो, रिस्पॉन्स कर देते हो, निकाल देते हो हाथ, रिस्पॉन्स, विथड्रॉल ऑफ द हैंड. हीट था, आप हीट को टच कर दिए, मैसेज चले गया अंदर सेंसरी न्यूरॉन से, किधर चला गया, स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मैसेज भेजता है, किससे भेजता है, मोटर न्यूरॉन्स को भेजता है. किसको भेजता है, मसल्स को भेजता है. पटक से हाथ निकालो, यू विल रेस्पॉन्स, आप निकाल देते हो हाथ, दैट इज विथड्रॉल ऑफ द हैंड. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Good explanation, Ashok, Ashu, thank you so much for your wonderful, valuable comment, my dear Ashok. Okay, I don't know whether you are a teacher or student. Thank you so much. Okay, fine, students. So see, if you give the comments now, it will boost me. So thank you so much. So now you have understood what you mean by reflex action and reflex आर्क. सिंपल है, बहुत इजी है. तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में डेफिनेशन को बाय हार्ट करो या नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन
तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए तुम लोगों को. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बार एक क्विक रिवाइज कर देंगे इसके बारे में. रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है? जो हॉट ऑब्जेक्ट है आप लोग टच कर दिए, फटक से हाथ निकाल देते हो, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन. एक्शन रिफ्लेक्स मतलब फास्ट क्विक एक्शन, तुम एक्शन कर दिए फटक से. लेकिन उसके अंदर जो क्या हो गया, हमारा हाथ निकालने के लिए क्यों हम लोग हाथ निकाल दिए? व्हाई वी हैव रिमूव द हैंड व्हेन वी टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट? Because what happened inside reflex arc, students. So definitions are already I have given to you. So ये जो टच करते हैं ना, टच हॉट ऑब्जेक्ट को इधर मैसेज भेजता है. सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर स्किन. सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज फास्ट भेज देता है, स्पाइनल कॉर्ड को भेज देता है. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दोनों नर्व्स मिक्स रहता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स. वो जो है ना, वो कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है सर? न्यूरॉन के बारे में अभी पढ़े ना, एक न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन है, मैसेज विल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. ओके, क्लियर? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली मैसेज भेजता है. किससे भेजता है? motor neurons, and you will suddenly remove your hand. Reflex arc. So today students we have seen receptors, we have seen photoreceptors present in eyes, phonoreceptors are present in our ears, olfactory receptors are present in our nose, gustatory receptors are present in our tongue, thermoreceptors are present in our skin. Receptors मतलब nerves, neurons. कैसे मैसेज जाता है? dendrites. From dendrites the message will enter where? cell body. बाद में एक्सॉन के अंदर, बाद में नर्व एंडिंग, बाद में साइनैप्स, बाद में नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स. How the messages will transfer inside the neuron? In the form of electrical impulses. Impulses, messages, electrical messages, electrical signals, electrical impulses. जो साइनैप्स के अंदर है ना, वो electrical impulses are converted into chemical signals. वो साइनैप्स के अंदर एक ही होता है, केमिकल सिग्नल से कन्वर्ट हो जाता है. इलेक्ट्रिकल इंपल्स से केमिकल सिग्नल्स. वो जो केमिकल सिग्नल्स है ना, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को एंटर होता है. किधर से होता है? डेंड्राइट से होता है. आपको एक चीज बताना था मैं, एग्जाम टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जो ये न्यूरॉन है ना, वो आगे बढ़ते रहता है, लंबा होते रहता है. इधर लंबा होता है, उधर लंबा होता है, ऊपर. क्यों लंबा होता है वो? क्यों? मैसेज रिसीव करने के लिए ट्राई करता है. डेंड्राइट्स. इन वन रील्स आई हैव सीन the brain cells are going everywhere for receiving the message. Wonderful it is there, students. Very long it will go until it does not receive the message. It will travel everywhere. So अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ब्रेन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. ब्रेन इज वंडरफुल स्टूडेंट्स. वी विल गेट ड्रीम्स. Brain is controlling everything. Brain is a wonderful organ. Are you getting this one? So आज हमने क्या पढ़ा है? रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं. Okay, we have studied about neuron and the parts of neuron and what are their functions we have seen. And also we have seen today reflex action and reflex arc. How reflex arc will take place. Inside the reflex action, this reflex arc is taking place. So have you understood, students, today's topic? So in the next class we are going to continue this the same chapter, Monday 7:30 p.m. control and coordination. Remaining topic we are going to discuss. So please Sunday time utilize कीजिए. ओके, संडे है ना, तुम लोग खेलो कूदो, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन थोड़ी देर आप लोग पढ़ाई भी करना चाहिए. फ्यू hours you have to give for studies. Daily if you study for little time,
Consistency, if it is there in you, definitely you will score more in SSLC, class 10. ICSE, CBSE students and state board students can also join my class. So thank you so much for your what support, students. So we will meet in the Monday 7:30 p.m. next session. Until then, keep working, keep learning, stay connected with me. Take care. Bye bye, students. Thank you.